Now we are going to discuss about the oxidation and reduction, which is the fifth type of chemical reaction. First, oxidation. From its name, we can guess that in this reaction, oxygen is to be involved. So, in oxidation reaction means the addition of oxygen. यदि कोनोसी reaction ले गोटे metal संगरे oxygen add होची, then that type of reaction is called as oxidation reaction. For example, इटी गोटे activity मु करिछि चित्र जोटा कि book रे already अछि. We will take a china dish, then we will try to heat it. Inside the china dish we have kept some copper. किछि copper powder रखिके एको heat करिवा किस सबरे कोन देखिबा copper रो ऊपरे गोटे black color रो coating हेज. Why? Because here the reaction, the equation is copper plus oxygen with heat, because we are providing heat. This is the symbol for heat. गोटे triangle कले सेटा heat रो symbol बुझाए. So it forms copper oxide. Then after form this in this reaction oxygen is added to copper संगे oxygen जेतो add हैला और copper oxide तैयार हैला, then this type reaction is called oxidation. Next we will pass the hydrogen gas over this copper oxide ऊपर कि hydrogen gas हमें flow करिबा, flow कले कोन हबो ता संगे भी heat दबा. So next reaction is 2CuO plus H2 मिसेला परे ये होची H2O plus Cu. ता माने एठी ऑलरेडी ऑक्सीजन थिला Cu संगरे, बट एठी कोन होची ऑक्सीजन ताटू बाहरी जाउची. ए प्रकार रिएक्शन को कहची रिडक्शन. जोठी ऑक्सीजन थिबो किंतु रिएक्शन हला पर रिमूव होई जिवो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन, मींस लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट एठी कोन होची आ गोटे एग्जांपल भी आ गोटे टाइप रिएक्शन भी एठी हेचे जोटा ऑलरेडी डिस्कस करचंती, दैट इज ऑक्सीडेशन. एठी Cu रो ऑक्सीजन O पळेची आ मिसी जाई H2 संगरे. सो जेहेतु H2 एठी O को पाइला आ H2O हैला, दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज एन रिडक्शन रिएक्शन. एठी आ गोटे वर्ड भी लिखा है जदि ऑक्सीडेशन बुझेबा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, जोठी एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, जदि कोनोसी अन्य कोनोसी एग्जांपल पढिला बेले देखिबा जे सेटु हाइड्रोजन पळौची ताहाले ताको ऑक्सीडेशन कोआ जिवो. जदि सेठी लूज ऑफ ऑक्सीजन होची ताहाले ताको रिडक्शन कोआ जिवो. एटा गोटे केयरफुली देखिले संग संग जानि हबो. Then example 2 is ZnO by zinc oxide plus carbon gives Zn plus carbon monoxide. So the reaction in which both the oxidation and reduction occur. जो reaction ले गोटे पटर oxidation होउथबो गोटे पटर reduction भी होउथबो ताको कोआ जिवो redox reaction by oxidation reduction reaction, whatever we can call it. This is all about the oxidation and reduction. Next, there are some everyday life activities which are related to or which are affected by this oxidation reduction reaction. That is, one is corrosion and another one is rancidity. Corrosion means if we are having any metal and that metal is affected by some kind of acids or some kind of moisture. जदि कौन सी metal जिनस हम पाखरे अच्छी, for example iron ले आमरो तैयारी होची window किछि दिन परे कौन होची ना तादरे रस्टिंग होची, आयरन सेठी रस्टिंग होची. ए रस्टिंग कौन पाई हुए ना जेतेबेले कोनोसी मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर एंड एसिड्स अराउंड इट, ताको कहा जाए कोरोशन. जेतेबेले आयरन ऑक्सीजन संगे मिसी फेरिक ऑक्साइड बना, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, एटा बहुत प्रकार डैमेज कराए, कार पार्ट्स हो, ब्रिज हो बा जेकोसी आयरन बा अन्य जिनस हो. इवन इट आल्सो अफेक्ट्स द कॉपर एज वेल एज द सिल्वर बा रूपारे तैयारी पाउंजी बा जेकोसी टाइप रो ऑर्नामेंट्स भी किछ दिन पर कला पड़ी जाए, बा जदि कॉपर रो आमे थाली यूज करचंती किछ दिन पर ता ऊपर गोटे ग्रीन कलर कोटिंग भी बसी जाए. दीज आर ऑल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज rancidity. rancidity फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुनुछु आमे rancidity मीनिंग होची जदि कौन प्रकार जिनस लाइक जो फैट और ऑयल अधिक थी से प्रकार फूड खाद्य जिनस को जदि आम बहुत दिन पर्यंत रखी सी भी ऑक्सीजन सागर मिसिकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे, आ तार स्मेल आ तार टेस्ट तार क्वालिटी भी संपूर्ण चेंज हो जाए, खाद्यटी नष्ट हो जाए. सो ये कौन कर ना नॉर्मली आम जो चिप्स खाऊँ, चिप्स रो पैकेट रे चिप्स अल्प थाए कि पवन बहुत भरिकी थाए, से एक्चुअली एयर नुहे से नाइट्रोजन गैस को दिया जाता है, बिकज नाइट्रोजन ये ऑक्सीडेशन को बहुत कम करके रखे. सो ये rancidity को जब आमको कमेवा पड़ो ताले आम से फूड रे एंटी ऑक्सीडेंट्स जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम बा स्लो कर यूज करवा. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर. Next we will discuss all the question answer that is given at the end of this chapter. Thank you.